Hello guys, welcome back again to my channel. So today we are going to do some numericals and we are going to learn a concept based on numericals that we are going to do are based on transient heat conduction, and the concept that we are going to learn, let's see. So let's start. So here you can see the first numerical. It is given two long rods of same diameter, one made of brass, having K is equal to 85 watt per meter Kelvin. That is, thermal conductivity of brass is 85 and thermal conductivity of copper is 375. Have one of their ends, like this, both are fins. They are rectangular shaped. Their one end is attached to a furnace. Imagine furnace as a plain wall. Their one end is attached to the furnace. So consider this as brass and consider this as copper. So both rods are exposed to same environment, at a distance of 105 meter away. 105 meter away, 105 mm away from furnace, and temperature of brass is 120 degrees Celsius. Temperature of brass is 120 degrees Celsius. So at what distance from furnace at the same temperature, that is at 120 degrees Celsius, would be that copper rod? They have asked F. It can be longer, it can be shorter. So let's see. Practically it should be longer. So if you all don't know, like practically copper should be longer or shorter, after the value you can come to a conclusion. So now let's start. So what we will do, we will first write data given. Now given, what all are the things given? K1 is equal to 85 watt per meter Kelvin. K2 is equal to 375 watt per meter Kelvin. X is equal to 105 mm away. X or L1, anything. Temperature of brass rod is equal to 120 degrees Celsius. So, if you have seen my previous videos of transient heat conduction, I told you there is an equation of higher differential order. What equation? D square theta by dx square minus m square theta, where m is equal to root of hp upon KACS. If you have seen my video, you will come to know why I use this equation. So the general solution is, now every theorem or whatever things we prove, it has a particular condition. So here also there is a condition, that is x is equal to 0, theta is equal to theta naught, and at x equal to infinity, theta is equal to 0. So instead of solving directly, I will give you the equation, which is theta by theta naught is equal to, that is rate of cooling rate up T minus TA upon T naught minus TA is equal to e raised to minus mx. This equation we have to use for solving and to find what? And to find distance. Then we will find effectiveness, efficiency, that we will see. So first part we will come. What we have to do? First, T is equal to TA plus T naught minus TA into e raised to minus mx. T naught minus TA I have multiplied, I have shifted, nothing complicated. So at temperature T, you consider this as capital, small, please. Okay, so temperature, that is this temperature, I have considered as 120, and TA, we don't know anything about TA, plus T naught minus TA e raised to minus m1 into, what is x? 0.105. Why 0.105? I have converted this into meter. So first equation we have got for brass rod. Now second equation, what is second equation? At the same temperature, read the question,
at what distance from furnace and the same temperature 120 is equal to again TA plus T0 minus TA e raised to minus m2L. Now why L? We don't know what is the length. We have to find. That is the main thing, no? So we have to compare both the equation, and what is the conclusion? When we compare both the equation, divide this both equation, we will get e raised to minus m1 into 0.105 is equal to e raised to minus m2L. So taking log on both sides, so log to the base e is natural log. You property, you know, minus m1 like log a the base a raised to n is equal to n log a to the base a n. So that property we have to use, minus m1 into 0.105 is equal to minus m2 into L. Minus sign cancel. So L is equal to m1 upon m2 into 0.105. Now m1 किधर दिख रहा है? नहीं रे, m1 नहीं मिल रहा, तो ये फॉर्मूला root of m is kc. K we know, we have to relate the terms. K we know, m is directly inversely proportional to k, root of k. So m1 के जगह क्या आएगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल. तो जहाँ पर m1 है वहाँ पर रूट ऑफ k2 आएगा, और जहाँ पर m2 है वहाँ पर रूट ऑफ k1 आएगा. रूट ऑफ k2 बाई k1 इंटू 0.105. तो आप ही बताओ क्या आएगा? रूट ऑफ k2 क्या है भाई? 375 और k1 है 85 इंटू 0.105. ये मीटर में आया, इसको mm में कन्वर्ट कर दे 220, तो आ गया ना 220 mm अवे, like I told. So the length of copper rod is greater, so it is equal to 220. Now what further they have asked, find and compare effectiveness and efficiency. अब ये शॉर्ट में आपको बताता हूँ. ये जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ना, एकदम सिंपल है. एफिशिएंसी ऑफ लॉन्ग फिन, इनफाइनेटली लॉन्ग फिन, क्योंकि फ्री सरफेस है, कुछ बताया नहीं है कहाँ पर जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 1/ml एफिशिएंसी. सो एफिशिएंसी ऑफ कॉपर इज़ 1/mc इंटू एल. कॉपर लिख देता हूँ, LC लिखा तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ से कंफ्यूज कर लोगे अपने आप को. एफिशिएंसी ऑफ ब्रास 1/mb इंटू LB. अब ये अपॉन ये डिवाइड किया तो MB अपॉन MC आएगा, पर वापस नहीं पता तो वापस वही करो, KC अपॉन KB थर्मल कंडक्टिविटी से ये रिलेशन से प्रूव किया ना, HP अपॉन KACS. So M is inversely proportional to root of K. So root of 375 ना by 85, so 2.1. It means efficiency of copper is 2.1 times of efficiency of brass, and efficiency is directly proportional to effectiveness, which is denoted by epsilon. So epsilon of C is equal to 2.1 into epsilon B. So these are the answers. सो समझे, हायर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करना है, जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला ये है, सब्सटीट्यूट करना है, एट द सेम टेम्परेचर कंडीशन दिया है, इक्वेट करना है, डिवाइड करके इक्वेट करना है, फिर प्रॉपर्टी यूज़ करना है लॉग टू द बेस ई का, उसके बाद m1 को रूट ऑफ HP अपॉन KACS इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ करके थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेट करके डिस्टेंस ढूंढना है, उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ लॉन्ग फिन 1/ml है, तो सेम थिंग वी हैव टू डू. नाउ the important thing that we have to actually learn is this: a thermometer in a protective well shows temperature 84 degrees Celsius. Find out error in measurement if temperature of inner surface is 40 degrees Celsius, length of well is 120 mm, thickness is 15 mm, thermal conductivity of well maintained is 55 watt per meter Kelvin, heat transfer coefficient is 223 watt per meter square Kelvin. So मैं क्लिक बेट नहीं करता,
सो आपको मैं पढ़ाऊँगा कॉन्सेप्ट थर्मोमीटर इन अ प्रोटेक्टिव वेल. वी हैव टू बेसिकली लर्न before doing this numerical that estimation of error measurement of thermometer in a protective well. So what we have to learn in that, पहले ये डायग्राम बना लेता हूँ मैं. सिंपल सा डायग्राम है. इंसुलेटेड है तो ऐसा ऐसा आएगा, वो आप देख लो मतलब. और ये टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है यहाँ पर, फ्लूइड फ्लो. और यहाँ पर एक कॉर्क अटैच्ड है. यहाँ पर थर्मोमीटर इंसर्टेड है, यहाँ पर थर्मोमीटर इंसर्टेड है. यहाँ पर ऑयल है, मतलब फ्लूइड है. The concept is basically temperature of fluid flowing through pipeline is higher than the ambient temperature. That is the temperature of the fluid which is flowing through the pipeline, the pura process, it is higher than the ambient temperature, that is than the surrounding temperature. That is why temperature at bottom of the well, like here bottom of the well is cooler. So ये टेम्परेचर के रिस्पेक्टिव में ही बाहर का टेम्परेचर बिहेव करेगा. So this is cooler. So the temperature shown by the thermometer will not be the true temperature, like actual temperature. It will not be actual temperature. That is why I am saying no. There will be a thermometric error in the measurement of the temperature. So another important thing that we have to know to solve this problem is there is no fluid from the tip of the well. तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो टिप ऑफ द वेल है, जो ये टिप ऑफ द वेल है, वो इंसुलेटेड है. तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था. क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था कि टिप ऑफ द वेल मतलब फॉर शॉर्ट एंड इंसुलेटेड टिप, द कंडीशन इज MLC लेस देन 5 वैल्यू and formula is cos hyperbolic m into LC minus x upon cos hyperbolic MLC. अब ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन T नॉट T माइनस T इनफाइनाइट अपॉन T नॉट माइनस T इनफाइनाइट इज इक्वल टू cos hyperbolic m LC minus x upon cos hyperbolic MLC, where MLC should be less than 5. Now this is at x equal to 0, starting initial at x equal to L. So यहाँ पर x equal to L है, LC ले लो. कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ से आप L ढूंढते हैं तो क्या फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक MLC. अब करते हैं सॉल्व. यही था बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपल था. इट इज़ वेरी इजी बट वी हैव टू नो before solving. So what we have to do, see, पहला अरेंज करता हूँ. Ti माइनस T इनफाइनाइट इज इक्वल टू T नॉट माइनस T इनफाइनाइट अपॉन कॉस हाइपरबोलिक MLC. तो क्या करोगे आप, Ti का वैल्यू दिया है 84. T इनफाइनाइट सराउंडिंग टेम्परेचर का वैल्यू दिया है, इनर सरफेस लेंथ ऑफ द वेल नहीं दिया है ना. तो Ti 84 माइनस T इनफाइनाइट इज इक्वल टू T नॉट इनर सरफेस यहाँ पर 40 माइनस T इनफाइनाइट अपॉन कॉस हाइपरबोलिक. दिस इज इम्पॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज m अगेन, रूट ऑफ HP अपॉन K इंटू A क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो H क्या है, H क्या है 223. जो पता है पहले फटाक से लिख लेने का, बेसिक फंडा ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. नाउ
थिकनेस, पेरीमीटर क्या आएगा, पाई डी। पेरीमीटर क्या आएगा, पाई डी आएगा, पाई डी। $55 into area is thickness, area is ID delta, okay, so yes, 1.5 into 10 raised to minus 3 the thickness, 4. So the value, what value will we get, what we will get is root of 223 upon 55 into 1.5 into 10 raised to minus 3 into 4, 103.98. and LC क्या आएगा, L plus T by 2, L plus T by 2 मतलब क्या, 120 ना, 120 into 10 raised to minus 3 plus 1.5 by 2 into 10 raised to minus 3, 0.12, ये 0.12 आएगा। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद इसको अल्फ़ा एक्स डाल दो, कैल्सी में शिफ्ट सॉल्व करो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर है 83.84 T infinite. And we have to find what, we have to find error in measurement. So length of the thermometer, the temperature measurement, the temperature at x equal to L, I told you, no, it will not give the actual temperature, so we have to do TL minus T infinite. So TL क्या था, TL 84, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पर स्लाइट एरर दिखाएगा. It is also error in terms of practical if we go by practical approach. 83.84, 0.16 आ रहा है मुझे, 84 minus 83.16, ओके. सो दिस इज़ द एरर, 0.1516 कुछ भी चलेगा. और एरिया कैसे निकाला मैंने, एरिया का फॉर्मूला क्या है बेसिकली, को मैं बताता हूँ, रुको ज़रा. The formula for area for this is P, first perimeter is pi d, and A naught is pi d delta is thickness. So P by A, D plus 2 delta आएगा actually, okay. So D plus 2 delta upon D delta. Okay, so this is how we found out. और LC का समझा ना, L plus T by 2, so ऐसा ढूंढा. So ये दो प्रॉब्लम मैंने आज सॉल्व किया है. फर्दर दो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा अगले पार्ट में. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हो. Till then, peace out, stay safe. Please like, share, subscribe guys.